नहीं, वो तो कभी कभी देखता हूँ, बाकी टाइम कैमरा में तो देखना होगा। स्टार्ट किया? हाँ, क्लोज कर दो उसको। मैं बैग में उस कवर है ना, उसमें अंदर रख दो। हाँ, उसके अंदर कवर है, इसका कवर होगा, स्लीव। स्टार्ट किया? So, good evening, everyone. So, I'm coming up with physical geography part 2. So, yesterday we had discussed part 1. And इसके साथ साथ हमारे कुछ initiatives है. There is Udan 3. So, Udan 3, okay, a quick and comprehensive revision होगा. And then daily editorial की summary भी मिलेगी आपको. जो भी editorial आते हैं हिंदू में, एक्सप्रेस में, उन सब चीजों का समरी भी मिलता रहेगा आपको. And then, okay, in order to improve your marks in the mains examination, so mains booster series भी है जिसमें आपको writing practice करा दी जाएगी. And today on 1st of May, on May Day, I'll be taking physical geography part 2. And then कल आपका international relations होगा. And then परसों फिर से इंडियन ज्योग्राफी में आऊंगा. उसके बाद 4th May को places in use again, and then 5th of May, 6th of May, so I'll be taking up the mapping session. So course चालू हो चुका है, you have to be ready. So GS foundation course has started for 24-25. So right now it is running on the CTR model. एंड आप क्लासरूम पे दे सकते हो, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगा, तो स्टूडेंट्स के ऊपर स्पेशल अटेंशन मिलेगा. एंड जीएस के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं. सो इस सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का भी आपको कोचिंग मिलेगा. एंड खास बात यह है, यहाँ पे आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी मिलेगी. एंड देन माइंड मैप्स. Okay, these are very important for the examination because finally at the end of the day you have to reproduce. आपको एग्जाम में लिखने के लिए आपको सब चीज याद रखना पड़ेगा, इसलिए you have the mind maps. And then CSAT की क्लासेस भी होंगे. And then you'll have pre-cum mains test series program. जो भी आप पढ़ रहे हो उसका टेस्ट कहाँ पे करोगे आप? टेस्ट सीरीज में. And you'll also get personal guidance. So focus will be on each and every student, and many more initiatives will be there. Now let's come back to our program. So yesterday we had discussed geological time scale. In this I have discussed about the Anthropocene and the Meghalayan age. And then I have discussed the 5th layer, that is new layer of the earth. And we have discussed about the solar winds, auroras, Van Allen radiation zones, and South Atlantic anomaly, and how the magnetic poles have been shifting. So magnetic poles एक जगह से दूसरे जगह कैसे shift हो रहे. And then we have discussed types of seismic waves. P waves, S waves, L waves and R waves. So तरह तरह के seismic waves जो होते हैं डिस्कस किया था. उसमें कौन सा फास्टेस्ट है, कौन सा स्लोएस्ट है, कौन सा मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है. These things we have discussed. And yesterday we have also discussed these things, that is anisotropy. So anisotropy is word associated with seismography.
ओके, द स्टडी ऑफ द earthquakes, you just have to remember this, इतना याद रखो sufficient है. Then what is this South Atlantic anomaly? So South Atlantic Ocean में एक जगह है ऑफ द कोस्ट ऑफ ब्राजील, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का बहुत ही वीक होता है, दैट इज साउथ अटलांटिक एनोमली. सो ये सब कल आपने डिस्कस किया था. नेक्स्ट, सो टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट रॉक साइकिल, बिकॉज आई वांट टू डिस्कस अबाउट दिस रॉक. यहां पे आप रॉक देख रहे हो. सो इसमें पत्थर है, पत्थर के साथ साथ यहां पे प्लास्टिक भी है. सो पत्थर के साथ साथ जो प्लास्टिक होता है उसको बोलते हैं प्लास्टिग्लोमरेट. This is called as plastiglomerate. So this word can be asked in the examination. So along this word, with this word, I'll also discuss the concept of the rock cycle. So the topic is rock cycle. So in this you have to know what is rock cycle, what are igneous rocks, what are sedimentary rocks, and what are metamorphic rocks. Metamorphic rocks. And the rock which you have discussed just now, that is plastiglomerate, it is a sedimentary rock. So I'll explain you why it is called as a plastiglomerate and why it is a sedimentary rock. So the word igneous rock, it is derived from the word ignis. Ignis का मतलब होता है फायर, आग. So the igneous rocks are produced by the volcanic eruption, means because of the intense heat. So अर्थ के अंदर बहुत सारा हीट है. So ये वाला हीट को बाहर निकलना है. The three ways of heat transfer: conduction, convection and radiation. So radiation is not possible because earth is not transparent. कंडक्शन भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अर्थ, मोस्ट ऑफ द अर्थ, दैट इज द क्रस्ट एंड द मैंटल, इट इज मेड अप ऑफ रॉक. वो पत्थर से बना हुआ है. एंड थ्रू पत्थर द रेडिएशन, ओके, द हीट ट्रांसफर डज नॉट टेक प्लेस दैट इजीली बिकॉज रॉक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. दैट्स व्हाई द ओनली वे टू हीट ट्रांसफर इज कन्वेक्शन. सो इससे क्या आता है, हीट, अर्थ के अंदर जो हीट है बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ द वोल्केनिक eruptions. So it is because of the fire. That's why these rocks are called as the igneous rocks. Igneous rocks. अर्थ के अंदर जब होता है it is called as magma. सी जो पिघला हुआ पत्थर है, मोल्टन रॉक, मोल्टन रॉक इनसाइड द अर्थ को मैग्ना बोलते हैं. एंड आउटसाइड द अर्थ इट्स कॉल्ड एज लावा. एंड दीज टू आर द इग्नियस रॉक्स. नाउ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स, इसके ऊपर होगा वेदरिंग. सो वेदरिंग इज नथिंग बट ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. तो बड़ा पत्थर जो है छोटे पत्थर में टूटेगा, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. एंड ब्रेक होने के बाद यहां पे सेडिमेंट्स फॉर्म हो जाएंगे, सेडिमेंट्स. एंड दीज सेडिमेंट्स विल बी कैरीड बाय द एजेंट ऑफ एरोजन. कौन कैरी करेगा इसको? एजेंट ऑफ एरोजन. एजेंट ऑफ एरोजन कुछ भी हो सकता है. ये पत्थर टूट के नीचे गिरने के बाद नदी
कैरी कर सकती है इसको, ग्लेशियर कैरी कर सकता है इसको, या स्ट्रीम्स कैरी कर सकता है, हवा भी कैरी कर सकती है. So all these are called as agents of erosion. Even the animals can also transfer these. Finally, ये जितने भी sediments है, they will go get deposited in the low-lying areas. Basically low-lying areas यहाँ पे कौन से है, समंदर है. So sediments यहाँ जाके deposit हो जाएंगे. जब ये sediments यहाँ जाके deposit हो जाएंगे, इसके बीच में क्लास्टिंग मटेरियल घुसेगा. क्लास्टिंग मटेरियल मीन्स सम काइंड ऑफ एडेसिव. इट इज एडेसिव मीन्स इन सब पत्थर को जोड़ने वाला. इस पिक्चर में आप देख सकते हो बहुत सारे पत्थर है. सब पत्थरों के बीच में क्लास्टिंग मटेरियल घुसता है. एंड दिस क्लास्टिंग मटेरियल कैन बी एनीथिंग. क्लास्टिंग मटेरियल, ओके, तो जोड़ने वाला गम जैसा चीज. इट कैन बी FeO, इट कैन बी CaO. कैल्शियम ऑक्साइड, चूना. तो पुराने जमाने में, ओके, सीमेंट के आविष्कार से पहले सो चूना से आपका कंस्ट्रक्शन होता था. सो इधर लाइम और आयरन ऑक्साइड, ओके, दीज टू आर एक्टिंग एज गुड क्लास्टिंग मटेरियल्स. सो इसके बीच में जब ये क्लास्टिंग मटेरियल घुस जाएगा, दीज विल बी बाइंडेड विथ ईच अदर. ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे. ओके, जुड़ने के बाद अंडर कंपैक्शन, अंडर प्रेशर ये जुड़ जाएंगे एक दूसरे से. जो भी सेडिमेंट्स है, ये सेडिमेंट्स सारा जुड़ने के बाद आपको ये सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म हो जाएगा. ये पत्थर बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा. Now, such kind of pathar is also called as conglomerate. So, conglomerate is actually a sedimentary rock. Conglomerate is actually sedimentary rock. अभी imagine करो, जो भी बीच में the binding materials है, adhesives है, उसकी जगह अगर प्लास्टिक आ जाएगा, then conglomerate can become plastiomerate. Okay, so that is how the word has come. Therefore that rock is called the sedimentary rock. and कैसे फॉर्म हुआ है? See, आजकल प्लास्टिक का यूसेज बहुत हो रहा है. जितने भी पानी के बोतल पी के फेंक देते हो, वो समंदर में चला जाएगा ऑटोमेटिकली. एंड मेजरली समंदर में फिशिंग नेट्स, अबैंडन्ड फिशिंग नेट्स, बिकॉज आपने जाल डाल दिया समंदर में, उसके बाद ओके वो पुराना होने के बाद ये फिशिंग नेट्स आर अबैंडन्ड इन द ओशंस. दे रिमेन लाइक दैट फ्लोटिंग इन द ओशंस. एंड बिकॉज ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शंस, सूरज की रोशनी के कारण ये टूटता है. हीट के कारण प्लास्टिक पिघलता है पानी में. वो प्लास्टिक पिघलने के बाद जब भी ये सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होते हैं, उसके बीच में आके घुस जाता है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्लास्टिग्लोमरेट. सो इट इज ए सेडिमेंट्री रॉक. नाउ दिस इज द फर्स्ट लेयर व्हिच इज फॉर्म्ड, एंड सेकंड लेयर भी आएगा. नाउ द फर्स्ट लेयर may not be same as second layer, because over millions of years the climate on the surface of the earth will not remain the same. Climate अलग अलग रह सकता है. Sometimes the climate will have lot of barish, so the sediments associated with the sea will be carried by rivers. तो sediments river लेके आएगा, वो अलग होंगे. कभी कभी extreme cold season होता है, that is called as the ice age, and during the ice age the sediments which are formed, they are different, because those sediments are carried by the glaciers. So during different time periods, different types of sediments will be deposited, and these are called as the sedimentary rocks. Therefore, the sedimentary rocks will be having a lot of layers like this. ये देखो यहाँ पे एक अलग अलग लेयर ना एक अलग अलग स्टोरी बताता है.
it tells a lot about the geological past. मीन्स पास्ट में अर्थ में कितना ऑक्सीजन था, कितना वाटर परसेंटेज था, whether during that time the volcanic eruptions were very rampant. अगर 200 फॉर एग्जांपल इमेजिन ये वाली जो लेयर दिख रही है आपको, व्हाइट वाली लेयर, से दिस लेयर हैज बीन फॉर्म्ड 250 मिलियन ईयर्स अगो, मेसोजोइक टाइम्स. देन उस टाइम पीरियड में अर्थ के ऊपर कितना ऑक्सीजन था, कितना नाइट्रोजन था, कितना कार्बन डाइऑक्साइड था, कितने वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वाज प्रोमिनेंट, ये सब चीजें आपको पता लग जाएंगे. सो दे आर एक्टिंग एज टाइम कैप्सूल्स, दे विल टेल यू ए स्टोरी. सो ईच एंड एवरी लेयर ऑफ दिस रॉक विल टेल यू a different story. That's why the sedimentary rocks are said to be having layers. They have strata. मैं अभी बोला था कि the sedimentary rocks are formed in the oceans because oceans are low-lying areas. So in between these sediments, if the marine life means समंदर में marine life होती है, like fish होगा, phytoplanktons होंगे, zooplanktons होंगे, so वो मरने के बाद उसका जो शरीर है, okay, it will be sandwiched between these sediments. So over a period of time, upon fossilification, वो दबने के बाद, बहुत सालों के बाद, the marine life in this will be converted to petroleum. Marine life will be converted into petroleum. आजकल जो भी पेट्रोल मिलता है ना, वो सब कभी ना कभी जियोलॉजिकल पास्ट में फॉसिलिफाइड या मरा हुआ मैरीन लाइफ है, या तो जू प्लैंक्टन्स, या तो शेलफिश, जेलीफिश, मछली वगैरह, वो मर गया, मरने के बाद पेट्रोलियम फॉर्म हुआ. सो दैट्स व्हाई द पेट्रोलियम इज मोस्टली फाउंड अलोंग द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, मींस जहां पे समंदर की गहराई ज्यादा नहीं है, 200 मीटर के आसपास हो, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ. सो इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ यू विल बी हैविंग द पेट्रोलियम रिजर्व्स and the crude oil. This is also called as crude oil. The crude oil at different locations is different. हर जगह सेम नहीं होगा ये क्रूड ऑयल. अभी गल्फ ऑफ मैक्सिको में मिलता है क्रूड ऑयल, हडसन बे ऑफ कनाडा में मिलता है, गल्फ ऑफ गिनी अफ्रीका में मिलता है, नॉर्थ सी नॉर्वे के पास मिलता है, पर्शियन गल्फ. सो अलग अलग जगह क्रूड ऑयल अलग अलग वैरायटी की होती है, क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस मेरीन लाइफ. तो हर जगह मेरीन लाइफ तो सेम नहीं होगा ना, अलग अलग होगा. तो इसीलिए पेट्रोलियम भी अलग अलग होती है. ओके, कहीं पेट्रोलियम में सल्फर ज्यादा होता है, कहीं कम होता है. ओके, अंडरस्टूड. लेट मी रीड द कमेंट्स नाउ. ओके, मैग्मा लावा, forces for the marine life into petroleum, educational. Okay, good. Now what happens is that, what are the properties of the sedimentary rocks? So I'll be writing the properties of igneous rocks first, then properties of the sedimentary rocks. So igneous rocks, no layers, no fossils. Okay, because this is in contrast with the sedimentary rocks. अभी sedimentary rocks में you'll have strata. अभी दिखाया आपको, बहुत सारे layers होंगे, and एक एक layer एक एक story बताता है, and इसमें fossils भी होंगे. And the marine life will form petroleum. And land के ऊपर जो plant life होता है, the plant life upon fossilification, it will form
कोल, एक कोल फॉर्म करता है। एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर रेड इन कलर, समटाइम्स रेड सैंडस्टोन, इट इज बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड। एंड जो व्हाइट सैंडस्टोन है, इट्स ऑल्सो सेडिमेंट्री रॉक, इट इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। छूने के कारण ये व्हाइट कलर में होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण ये रेड कलर में होता है। ओके, आई विल शो यू द पिक्चर्स ऑफ आल्सो हियर। तो यहां पे आप देख रहे हो ये रेड सैंडस्टोन है, इसमें आयरन ऑक्साइड घुसा हुआ है, इसमें आपको सेडिमेंट्स भी क्लियर भी दिख जाएंगे। ये व्हाइट सैंडस्टोन है। Now, if you want to rate it with history, this red sandstone, most of the monuments in India, such as Red Fort, Humayun Tomb, Fatehpur Sikri, jitna bhi, most of the Mughal architecture, most of the, not all, Taj Mahal bhi Mughal architecture hai. So it is made up of red sandstone. And Mathura School of Art, agar aap history mein jao, to Mathura School of Art hai, that is, Buddhist art. It is made up of red sandstone because India में ये मिलता है। अभी white sandstone generally you will find in Himalayan region। अभी गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, जब बुद्धिज्म ट्रैवल करके अफगानिस्तान की तरफ गया था, दुनिया में हर जगह फैल गया, लेकिन जब अफगानिस्तान में गया था वहां पे गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ। तो गांधारा जो है आज का कांदाहार है। तो वहां पे जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स आपको दिखेंगे, दे आर मेड अप ऑफ व्हाइट सैंडस्टोन। ओके, गॉट इट? एनी डाउट्स? नाउ दिस इज अबाउट igneous rocks, sedimentary rocks. Next you have metamorphic rocks. Metamorphic. आप मुझे ये बताओ, आपको यहां पे ये दिख रहा है, अगर मैं इसको दबाऊंगा बहुत, इसके ऊपर बहुत प्रेशर डालूंगा, डू यू थिंक द केमिकल एंड स्ट्रक्चरल कंपोजिशन विल बी द सेम? नो, ये रॉक इस रॉक की तरह नहीं दिखेगा, इसके अंदर केमिकल चेंजेस आएंगे, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सो दिस चेंज इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब चेंज। सो ईदर द इग्नियस रॉक्स or the sedimentary rocks, upon application of pressure plus temperature changes, means very high temperature changes, they will undergo metamorphosis. Now some of the examples are granite. So granite is igneous rock. Upon metamorphosis it will be forming gneiss form करेगा। Then you have limestone. Limestone is nothing but चूना। Upon metamorphosis ये बनेगा मार्बल, जो आप में घर में यूज करते हो। See, इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? They can ask the economic significance of the rock. कहाँ यूज कर सकता है ये वाले रॉक्स को, ये भी पूछ सकता है। अभी ग्रेनाइट कहाँ पे यूज करते हैं? घर में यूज करते हैं, या फ्लोरिंग में यूज होता है, या बिकॉज ग्रेनाइट का एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न होता है, और पैटर्न क्यों होगा मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। एंड मार्बल भी क्यों होते हैं? बिकॉज इट हैज बिकम हार्ड। चूने को ओके भट्टी में डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सारा प्रेशर लगा रहे हो, देन वो मार्बल बनेगा, इट्स वेरी हार्ड। एंड बोथ ग्रेनाइट एंड मार्बल ऑल्सो हैव द कूलिंग इफेक्ट्स, so that's why they are used in the flooring. And then you have clay. चिकनी मिट्टी जो होती है, क्ले और शेल। चिकनी मिट्टी में डेड मेरीन लाइफ अगर आ गया है बीच में, इट्स कॉल्ड एज शेल। नाउ क्ले और शेल कैन ऑल्सो अंडरगो मेटामॉर्फोसिस एंड दे विल बी फॉर्मिंग स्लेट, सिस्ट, फिलाइट। सी, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं पूछेगा। सो दे विल बी आस्किंग दिस ओनली। ओके, आई होप यू आर नोटिंग डाउन। नाउ लेट्स टॉक समथिंग एल्स अबाउट द इग्नियस रॉक।
आई गेस आज किसी को लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है. इफ यू वांट मी टू यूज मोर हिंदी आई कैन यूज इट. अंडरस्टूड? किसी में कुछ डाउट आता है तो पूछ सकते हो आप. ओके यस, ये सब प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स 2023. सी ऐसा नहीं कि सिर्फ 23 के लिए काम आ जाएगा, सिर्फ 24 को काम आता है, 25 को भी काम आता है. बिकॉज कल भी मैंने बताया कि इसी प्रीलिम्स में लास्ट 7 महीने के करंट अफेयर्स नहीं पूछेगा, लास्ट 4-5 ईयर्स 2-3 ईयर्स का भी पूछ रहा है चीजें. सो अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए अपेयर कर रहे हो तब भी ये हेल्पफुल है. ओके अर्चना. तो इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स ना, जब ये मैग्मा बाहर आएगा कभी बीच में जम सकता है. इट कैन गेट फ्रोजन, द मैग्मा कैन बी कूल्ड हियर ओनली. शायद उतना ताकत नहीं है, उतना इनिशियल एनर्जी नहीं है, नहीं तो बीच में कोई इनपरमेबल रॉक आ गया, कोई हार्ड रॉक आ गया बीच में, इसलिए ये मैग्मा बाहर नहीं निकलेगा, ये अंदर ही कूलिंग हो गया. दिस इज कॉल्ड एज द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. एंड अगर बहुत ताकत आ गया, if it comes out, so this is where the lava is solidified. So this forms extrusive igneous rock. Extrusive. And दोनों की प्रॉपर्टीज जो है ना ये अलग अलग होते हैं, इंट्रूसिव के एंड एक्सट्रूसिव के. सी इंट्रूसिव जब मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाएगा, मैग्मा जम जाएगा, उसके अंदर पैटर्न फॉर्म होता है. सो दिस वी कॉल एज क्रिस्टल्स. सो अभी मैंने बताया ग्रेनाइट क्यों यूज करते हैं फ्लोरिंग में, बिकॉज उसमें बहुत सारा क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, पैटर्न होता है. सो ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. एंड इन दोनों में केमिकल सेम है, मिनरल सेम है, एक ही रॉक है, बस एक ही डिफरेंस है, ये अंदर जमा हुआ है, ये बाहर जम गया, इतना ही डिफरेंस है. लेकिन देखो फिजिकल अपीयरेंस दोनों का अलग है. ऐसे लगता है कि ये दूसरा रॉक है, लेकिन दोनों ही सेम रॉक है. इसको बोलते हैं रियोलाइट, इसको बोलते हैं ग्रेनाइट. सो दिस इज द इंट्रूसिव फॉर्म एंड दिस इज द एक्सट्रूसिव फॉर्म. बस आपको ये ध्यान रखना है कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो है इसमें होता है स्लो कूलिंग. So because of the slow cooling, you'll have large crystals. इसमें पैटर्न फॉर्म होता है, बहुत ही सुंदर दिखता है, चमकता है. लेकिन एक्सट्रूसिव जो है ना, इसमें पैटर्न फॉर्मेशन नहीं होगा. क्रिस्टल्स या तो बहुत ही छोटे होंगे, स्मॉल क्रिस्टल्स, और नो क्रिस्टल्स. Now, can you tell me an example, of a rock? It's a rock only actually, जिसमें क्रिस्टल ही नहीं है, तो वो कैसे दिखेगा आपको? क्या दिखेगा क्या? अगर कोई रॉक में क्रिस्टल बिल्कुल नहीं होगा, 0 क्रिस्टल्स होगा, क्या आपको वो रॉक दिखेगा? बताओ मुझे, कमेंट्स में कमेंट करो. इसका आंसर थोड़ी देर में बताऊंगा मैं, आपके कमेंट्स देने के बाद. Okay, voice is not clear. Okay, this is about the rocks. So ये सब चीजें क्यों बताया मैंने? Because of this plastic glomerate. So यूपीएससी का माइंड को आपको रीड करना है. So आजकल यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा प्लास्टिक ग्लोमेरेट वेयर इट इज फाउंड. एसएससी का एग्जाम नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा. So question कैसे देगा? Recently in news you must have come across a word called as plastic glomerate. Okay, so analyze the following statements. 4 statement देता है. So first statement, so recently this rock has been found off the coast of Brazil. First statement. Second, plastic glomerate is a sedimentary rock. See, such kind of rocks are also found
from a volcanic eruption. Okay, statement D, global warming, okay, is also affecting the formation of such kind of rocks. 4 statements. So like this, they'll be giving you 4 statements, then you have to analyze. Okay. So अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है ना, उसका आंसर बताता हूं मैं. अगर कोई रॉक में क्रिस्टल अगर बिल्कुल नहीं होगा, यानी वो रॉक ट्रांसपेरेंट होगा. ग्लास इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल. ग्लास में क्रिस्टल्स नहीं होते. ओके, सो एंड कल मैं एक चीज डिस्कस कर रहा था रिगार्डिंग एंथ्रोपोसीन. सो सच काइंड ऑफ रॉक फॉर्मेशन also supports the idea of the Anthropocene, because the plastic जो है, जो rocks के बीच में घुस रहा है, is the invention of the humans. It is not found naturally in the nature. So because of the humans, the rocks are also changing. The geology of the earth is also changing. The humans are responsible for changes of topography of the planet. So that's why the plastic glomate is a good example of the Anthropocene age. Okay. Yes, very good, Suman. A phanetic rock, which is not visible. Okay, good. Diamond is different, Rohit. Diamond is, okay, the allotrophic form of carbon. उसको हम rock नहीं बोलेंगे, लेकिन रॉक के लिए क्वालिफाई करने के लिए ना, you should have silicates. So next we will be discussing the topic volcanism, because recently in the news, okay, you have some explosive volcanoes such as along Tonga, ये एक है, and secondly you have something called as the eruption in Hawaii Islands. So Hawaii Islands के around भी eruption हुआ है. So that's why I'll discuss some of the basics of the volcanism chapter. Okay. So why I am discussing this? Why? Because Tonga had a huge explosive eruption. This has also created tsunami. एंड सुनामी कहां पे क्रिएट हुआ? फिजी में क्रिएट हुआ, जहां पे इंडियंस रहते बहुत सारे, इसलिए इंपॉर्टेंट है. एंड बिकॉज ऑफ दिस एरप्शन न्यू आइलैंड फॉर्मेशन भी हुआ है. एक नया आइलैंड फॉर्म होकर बाहर आ गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है. ओके. सेकेंडली अभी भी ओके रिसेंटली माउना लोवा एरप्शन चालू हुआ है हवाई में. So Hawaii belongs to USA. It's located near, almost on Tropic of Cancer. So it's in Pacific Ocean. And this is an example of hotspot volcanism. Example of the hotspot volcanism. So I'm discussing this chapter because of these reasons. Now, if I'm dividing these two, so this is violent eruption, and ये जो नीचे वाला है hotspot volcanism जो है, this is a silent one. दोनों अलग अलग है. So इसके बेसिस पे भी questions can be framed. Now let's discuss what is this violent silent volcanic eruption and silent volcanic eruptions. Okay. Yes, I'll be talking about climatology also. पहले मुझे geomorphology खत्म करने दो. I'll come to climatology also. Don't worry. एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे. See, ये कोर है. अगर कोर के ऊपर क्या होगा? मैंटल होगा. कल डिस्कस किया था ये वाला चीज है. अगर कोर मैंटल बाउंड्री से
कोई मैग्मा आ रहा है, so this magma is highly liquid, it is highly fluidic, ये पानी की तरह बहेगा, इसमें विस्कोसिटी बहुत कम होती है क्योंकि इसमें सिलिका कंटेंट कम होता है, सिलिका इज लो। एंड ये वाले लावा को या मैग्मा को बेसिक लावा भी बोलते हैं, बेसिक लावा। एंड जब ये अर्थ के ऊपर आएगा, सिंस इट इज नॉट विस्कस इन नेचर, पानी की तरफ बहेगा, इसको छोटी सी भी छेद मिलेगी या क्रैक मिलेगा, आराम से बह जाएगा एंड it easily spreads on the surface, creating vast extensive lava sheets. Means it will be creating very large plateaus. So it will be creating vast extensive basaltic sheets. A very good example is Deccan lava traps in India. Deccan plateau बोलते हैं ना, very good example of this. So this is how the basaltic sheets are created, because the lava is sourced from deep earth interiors. Now second type of volcanism जो होता है, that is when the oceanic crust is undergoing subduction, it will also give rise to volcanism. Okay, means oceanic crust जो है, because it is heavy, it will undergo subduction, earth के अंदर डूबेगा, and because of the heat inside, and it's also called as decompressional melting, because when the crevasse is created, when the trench is created, okay, a lot of space is being created. So when the space is created, the solid will be converted to liquid because it has a room to expand. This is called as decompressional heating. So it is because of two reasons. Because the temperature is increasing inside. Secondly, it's because of decompressional heating. And third reason can be water, the role of water. So along the trenches, the water will also move inside, and water, mixing of the water in magma will reduce the melting point of the rocks. Means आप एक dry rock ले लो, wet rock ले लो. So wet rock का melting point कम हो जाता है. So these 3 points please remember. And because of the subduction, a volcanism is created, and this volcanism is acidic. एकदम opposite properties है. It is acidic. It has high silica. Means ये बहुत गाढ़ा होता है. It is highly viscous in nature. Highly viscous. So when this viscous lava is trying to come out of a small vent, it won't be able to come out that easily. So that's why it causes explosion. Explosion. So this is the example of the Tonga. And this is an example of the Hawaii. That is Mauna Loa. Understood? So these are the two types of volcanic eruption. So basically when you are going deep inside the earth, when the depth increases, the acidity decreases, silica content decreases, viscosity decreases, and the melting point increases. So these are the two types of volcanism. Of course, there are various types of volcanism, like Pelian type, Strombolian type, right? Hawaiian type, okay, type. So don't get into all these things. So सब जानने की जरूरत नहीं है. ये basic है. ये समझ गए, then आपका concepts you will be able to answer any type of question. Okay. Now, so volcanism में क्या क्या questions पूछ सकता है? So I'll be helping you in creating a mind map here. They can ask the type of landforms here.
So landforms में two types of landforms are there. Okay, one is intrusive landforms, other is the extrusive landforms. Extrusive. So intrusive में you can have rocks formed just below the surface. These are called as hypabasal formation. ये surface के just नीचे form होता है. And you can also have the plutonic rocks. These are formed very deep. अगर मैं surface draw करूंगा, they will look somewhat like this. So this is the surface. And the surface के just नीचे hypabasal formations होंगे. And surface के बहुत अंदर, very deep, here you have the plutonic rocks. So these plutonic rocks, they are also called as batholiths. The batholith. Batholith literally means basement rocks. In fact, these rocks will be providing the base for very big mountains. See, अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट होना चाहिए. वैसे ही अगर इसके ऊपर बड़ा पहाड़ आ जाएगा, a very big volcanic mountain is being formed, then इसके लिए stability चाहिए. That stability is provided by this batholiths, also called as the basement rocks, also called as the basement rocks. Now basement rocks will also form shield regions. कभी ना कभी ये पूरा ऊपर का जो माउंटेन है एरोड हो जाएगा. It will undergo denudation. After it undergoes denudation, the batholiths will be exposed outside. These exposed batholiths are called as the shield regions. Exposed batholiths are called as shield regions. And the shield regions are the oldest rocks, means बहुत पहले form हो चुके हैं. Because in order to erode all this rock and to expose the batholiths outside, basement rocks outside, it will take a lot of time. Means अभी आपको वर्ल्ड में जो shield regions दिखेंगे ना, वो 4 billion years ago या 3.5 billion years ago form हो चुका होगा. And examples of this: Canadian Shield, Brazilian Highlands, Katanga Plateau in Africa, जिसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, आजकल न्यूज में बहुत है वो. एंड देन यू हैव स्कैंडिनेवियन हाइलैंड्स, जहां पे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है. फिनलैंड अभी रिसेंटली नेटो में ज्वाइन हुआ है. देन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज अ शील्ड रीजन. एंड इंडिया में भी 2 शील्ड रीजन्स है. देयर इज द सिंगभूम शील्ड एंड द धारवाड़ शील्ड. सिंगभूम शील्ड इज नथिंग बट छोटा नागपुर प्लेट्यू, ओके, जो बिहार में, ओके, थोड़ा बहुत यहाँ पे या झारखंड में, एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे ओडिशा में, नदर्न पार्ट्स ऑफ ओडिशा में भी है. So this is called as the Singhbhum shield. And then you have the Dharwad shield, which is also called as the Karnataka plateau. So अभी recent में, so इसमें से current affairs क्या है? So current affairs from here is the Singhbhum shield of the Chota Nagpur plateau is one of the oldest. अभी पता चला कि बहुत ही पुराना है. It has been formed around 4.1 billion years ago. आपको इस ज्योग्राफी के स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में अगर देखेंगे, ओके, द ओल्डेस्ट रॉक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी ऑफ कनाडा लिखा रहेगा. लेकिन उससे भी पुराना पत्थर, ओके, हमारे देश में यहाँ पे सिंगभूम प्लेट्यू में मिला हुआ. सो दैट इज द न्यूज. सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इतना टाइम स्पेंड किया मैंने. Okay, so I guess this is clear to you, right? So
Somebody is asking, why is it not possible encounter ocean continent plate divergence as per plate tectonic theory? Not possible encounter. I question is not clear to me. Not possible to encounter ocean continent plate divergence. एनकाउंटर मतलब आप किसकी बात कर रहे हो? अभी यूपी में एनकाउंटर होते हैं वो मुझे पता है. कैन यू प्लीज रिफ्रेश पैराफ्रेज दिस क्वेश्चन? एक बार फिर से रिफ्रेश कर दो आप. ओके, यस सुमन, यू आर राइट. आरावली भी बहुत पुराना है. आरावली फॉर्म हुआ है 2.1 बिलियन ईयर्स पहले. ये तो 4.1 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ है. ये बहुत ही पुराना है. यस सविता पटेल, यस यू आर राइट. ओके, जीसी लियोंग में नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी ऑफ कनाडा लिखा है, लेकिन अभी रीसेंट करंट अफेयर है इसलिए बता रहा हूं. इस साल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. Now coming to hyperbasal formations, these are formed just below the surface. आपने सुना होगा ये laccolith. This is undelivered volcano. Paccolith. These are the lens-shaped rocks. Lopolith. These are the saucer-shaped rocks. Sills are horizontal intrusions. Dikes are vertical intrusions. I'll show you how the dikes will look like. So dikes are the vertical rocks. तो ऐसे दिखेंगे dikes, ऐसा कुछ. कहां पे गए? कहीं मिस हो गया. सब बाद में दिखाऊंगा मैं आपको जब आएगा. Okay. So dikes are the vertical intrusions. यस, ये होता है डाइक. तो साइड में जो है ना, इसको बोलते हैं कंट्री रॉक्स या प्राइमरी रॉक्स, और दिस आर द सेडिमेंटरी लेयर्स. सो इन बिटवीन दिस लेयर्स अ वर्टिकल इंट्रूजन ऑफ द मैग्मा, ओके, विल फॉर्म डाइक. So these are the various types of hyperbasal formation, plutonic rocks. Now let's come to extrusive rocks. Now these extrusive rocks are created because of volcanic eruption. You can see the volcanic eruption. So this is an explosive volcanic eruption. Okay, जो मैंने पहली बार दिखाया था ना. So here the magma or the molten rock is sourced from the upper layers. So ऊपर के हिस्से से यहां से लावा आती है. ये भी एक्सप्लोसिव है. अभी आप देख सकते हैं यहां पे इसमें से लावा भी निकल रहा है, गैस भी निकल रहा है, बहुत सारे पत्थर भी निकल रहे हैं. ओके, तो इन सब का नाम है, ये सब नाम डिस्कस करेंगे. तो ये भी देखो एक्सप्लोसिव है. इसमें से धुआं जैसा निकल रहा है, इसमें से पूरा ही धुआं निकल रहा है. सो जो वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे एमिट. अभी ये देखो, ऐसे लग रहा है कि आग ही जल रहा है बस. ओके, लावा उतना नहीं निकल रहा है, इसमें धुआं निकल रहा है. ये देखो, ये नदी की तरह बह रहा है. मीन्स दिस इज हाईली फ्लूइडिक इन नेचर. सो हवाई में ऐसी टाइप का लावा बाहर निकलती है. ये भी देखो पानी की तरह बह रहा है. सो दिस इज हाईली फ्लूइडिक इन नेचर. So these are the various types of eruptions. So we'll not be concerned about this. Okay. Now we'll talk about various types of rocks. Extrusive landforms discuss करेंगे. Now this extrusive landforms, so it can be because of two types of lava. अभी डिस्कस किया था हमने. एक होता है बेसिक लावा, दूसरा होता है एसिडिक लावा. एसिडिक लावा. सो बेसिक लावा, इट इज कमिंग फ्रॉम डीप अर्थ इंटीरियर्स, अंदर से आएगा. सो इट विल बी फॉर्मिंग ए डोम शेप और ए शील्ड शेप
ओके, डोम या शील शेप फॉर्म करेगा. एग्जाम्पल ऑफ दिस इज एनी हॉटस्पॉट. एनी हॉटस्पॉट इज ए गुड एग्जाम्पल. बेस्ट एग्जाम्पल इज हवाई. एक नाम याद रखो, अभी रिसेंटली न्यूज में भी था. इट इज मौना लोवा. नाउ this magma can come from a hole, that is central vent. Now it can also come from a fissure. So fissure is nothing but crack. Means earth के surface के ऊपर छेद होता है. This is also called as divergent plate boundary. It's also called as rifting. Imagine, okay, आपने काट दिया अर्थ के लिथोस्फीयर को. जैसे आपने आपकी हाथ को काटा है तो क्या होता है, ब्लड निकलेगा अंदर से. वैसे ही जब लिथोस्फीयर कटता है उसके अंदर से मोल्टन रॉक बाहर निकलती है. सो इट स्प्रेड्स ऑन बोथ द साइड्स. सो दिस विल बी फॉर्मिंग एक्सटेंसिव लावा शीट्स. एक्सटेंसिव लावा शीट्स. द बेस्ट एग्जांपल इज डेक्कन ट्रैप्स. Deccan traps, best example. बाकी examples भी है, such as Colombian Snake River Plateau in USA, थोड़ा बहुत कनाडा में. Okay, in South America you have Patagonian Plateau. In Australia you have Kimberley Plateau. In Ireland you have Antrim Plateau. In Russia you have Siberian traps, and in Ethiopia you have Ethiopian Highlands. ये सब examples है इसका. Okay, then you have the acidic lava. Now acidic lava will be forming a conical shape. एक बड़ा बड़ा mountain form करेगा. And such volcanoes are stratovolcanoes because अलग अलग टाइम पे अलग अलग लेयर्स निकलता है इसमें से कभी सिर्फ पानी आ गया बाहर, पानी का एक लेयर फॉर्म होगा. से कभी सिर्फ ऐश आता है, ऐश का एक लेयर फॉर्म हो गया. एंड कभी कभी लावा बाहर निकल जाती है, लावा का एक लेयर फॉर्म हो गया. सो different kinds of materials will be released. That's why such kind of volcanoes are also called as composite volcanoes, or since the layers are also there, they're also called as stratovolcanoes. And in these stratovolcanoes, okay, you'll be having tephra. बस आपको ये याद रखना है, टेफ्रा इज एसोसिएटेड विद वोल्केनिज्म. सो टेफ्रा कैन बी ऑफ 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द साइज लेस देन 2 mm. इसको बोलते हैं वोल्केनिक ऐश. 2 to 64 mm. दिस इज कॉल्ड एज लैपिली. लैपिली इज पी शेप्ड रॉक. मटर जैसा पत्थर होता है, छोटा छोटा मटर है ना, पता है ना. ओके, ग्रेटर देन 64 mm. This is called as the volcanic bomb. ये बड़ा होता है volcanic bomb. अभी जो आपने volcanic eruption में देखा है, पत्थर बाहर आ रहे थे. इन सारे को मिला के ना, it is also called as pyroclastic material. It's also called as pyroclastic. Pyro means fire. Clastic means rock. So simply we can call them as burnt rocks. Okay. Now, if a volcanic mountain is covered by ash, it is also called as cinder cone भी बोलेंगे. It's also called as cinder cone. So these are some of the basics of the volcanism, so which can be asked in the examination. Okay. Now rest of the things we can talk in plate tectonics. Now how these different types of volcanism is associated with the plate tectonics. So 3 types of interactions: convergent plate boundary, divergent boundary, and transform plate boundary.
So in convergent, it is of two types. One which is associated with this subducting oceanic plate. So बाकी में CC-CC interaction होता है, continental crust and continental crust. And यहाँ पे you can have the CC और OC, कुछ भी हो सकता है. So जब भी oceanic plate subduction होगा, then you'll have explosive volcanism because the magma is sourced from very shallow layers at max 700 kilometers. So this is explosive volcanism. It is found along the Pacific Ring of Fire. This is along the Pacific Ring of Fire, that wherever the subduction is taking place. The second one is CC-CC interaction. यहाँ पे volcanism नहीं होगा. So since we are discussing only volcanism, we'll discuss this. And transform plate boundaries में side by side interaction होता है. The plates are just sliding past each other. So that's why this is avolcanic. This is non-volcanic. Now along the divergent plate boundary, this is nothing but fissure reaction. Okay. So fissure is like a crack from where the lava is coming out. So here we'll be having silent volcanoes. So one such volcano which is in the news recently and the region is also in conflict, Goma volcano. Goma. So Goma is located in DR Congo, Democratic Republic of Congo, along the Great African Rifting. It's located along the Great African Rifting. See here, this class is very pre-specific 2023 target करने के लिए. So I am doing only those locations and that content which will be helpful for your pre. And I'm specifically targeting those sections from where the questions can be asked. Let me read the comments. Yes, Suman, you're right. Okay, laccolith is convex shaped. Sir is keeping 11th and 12th NCERT geography as a base book enough for UPSC or yes, you should read GC Leong as well, but you know आपको उतना पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा, so इसीलिए मैं specifically आपको जो information exam में पूछ सकता है ना, मैं सारे एंगल से कवर कर रहा हूँ. Okay, so Ria is asking which type, too much types of rocks difficult to understand. ऐसे आपको अगर ज़्यादा समझना है, जिन आपको क्लास करना पड़ेगा. ए प्री के लिए ज़्यादा फोकस है, सो मैं थोड़ा लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही बताऊंगा जो एग्जाम के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो. आपको अगर ज़्यादा समझना है तो मेरी रॉक्स की एक क्लास पड़ी होगी ऐप पे, OnlyIAS के ऐप पे, वहाँ पे ज़्यादा देख सकते हो. Okay, Suman is asking all gases from volcanic eruptions or GHG. No, see again, very good question. Okay, Suman is asking what all types of gases are released during a volcanic eruption. कौन से type of gases release होते हैं? Almost all. आप एग्जाम में ठोक दो all the above. आपको जानने की भी जरूरत नहीं है all the, बट फिर भी मैं बता देता हूं. ओके, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में CO2 is produced. CO2 is released. This is around 60 to 90% CO2. Sorry, 60 to 90% water vapor H2O. CO2 को परसेंटेज है 10 to 40% CO2 प्रोड्यूस होता है. बाकी नेम इट, यू हैव इट, हाइड्रोजन, मीथेन, क्लोरीन, आर्गन, हाइड्रोजन सल्फाइड, these are some of the important components. लेकिन आप बता सकते हो क्या कि ये वाला गैस रिलीज नहीं होगा फ्यूचर में? नहीं हो सकता है ना. शायद हमने जितना भी गैसेस रिलीज हुआ है फ्रॉम ऑल द वोल्केनिक इरप्शन, वी हैवंट इवन टेस्टेड देम, हमको पता नहीं. लेकिन दिस आर सम ऑफ द गैसेस. बट आप एग्जाम में ऑल द अबव मार्क कर सकते हो, लेकिन ये दोनों ज्यादा क्वांटिटी में. एंड रेडॉन जरूर याद रखना,
रेडॉन इज अ गैस विच इज रिच इन द अर्थ्स लिथोस्फीयर. सॉइल के अंदर रेडॉन की गैस की क्वांटिटी अच्छी खासी होती है. इनफैक्ट the one gas which is closely related to the soil is radon. Okay, good question. Next is DD. Plate tectonics theory denies the possibility of ocean continent divergence, but the reason is not clear. Please explain. Denies the possibility of ocean continent divergence. अच्छा, say जब भी ब्रेकिंग होती है ना, जब भी डाइवर्जेंस फॉर्म होता है, ओके, या तो कॉन्टिनेंट में होगा, ये टूटेगा, या तो ओशियानिक क्रस्ट जो होती है वो टूटेगा. ओशियानिक क्रस्ट इज थिनर, दिस इज ओसी, ये ओसी है, सीसी है. या तो ये इसके नीचे फॉर्म होता है, इसके नीचे फॉर्म होता है, राइट. एंड जब ये टूटेगा बीच में नया ओशियानिक क्रस्ट फॉर्म होगा. Now, plate tectonics theory does not deny it explicitly, but till now we haven't found any instance where this mantle convecting cell, okay, is found at the boundary of OC and CC. Bas, okay, you can't deny any possibility. It will not say it explicitly. It might have said that, okay, there is no example of such thing, right? So Adarsh is asking, classes कब से शुरू हो रही है? Please anyone tell me the timing. So आप आपको एडमिनिस्ट्रेशन ही बता पाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ लेना आप एक बार. Okay, okay. I'll explain what is relative humidity and absolute humidity. Yes, Goma volcano. Okay, good. Congo. So barren island is formed due to the subducting oceanic plate. So barren island is, so it is formed at the convergent plate boundary. It is formed between Indian plate and the Burmese plate. Okay, understood? So this is all about the volcanism which I can discuss with respect to the prelims. Okay, so this is the volcanic eruption in Tonga Islands. So Tonga Island is located off the coast of Australia. मैं locations भी बता देता हूँ. Anyways, we'll have a separate session on mapping. I'll do it there. Okay. Now one more discovery they have made, that is, एक नया discovery है, इसके बारे में बताऊंगा मैं. So whenever the oceanic plate is undergoing subduction, इस तरफ कुछ भी हो सकता है. You can have a OC and this is obviously CC. Sorry, this is OC. Sorry, this is CC, continental crust. And यहाँ पे पूरा ocean है. So this is all the ocean. So whenever the oceanic plate is undergoing subduction, the water will also go inside. This is H2O. H2O will be going inside. So when the H2O goes inside, this H2O also has to be given outside. So through the volcanic eruption, तो पानी जो अंदर जा रहा है ना, वो बाहर भी आना चाहिए. लेकिन recent scientific experiments में ये पता चला है कि more amount of water is going inside and less amount of water is coming out. It means the Earth's mantle is sucking more water, more sea water. Okay. In fact, 4 गुना ज्यादा water Earth का mantle absorb कर रहा है than it is releasing. Though the water vapor is one of the important component, but it is found that this is written scientific study. Okay, examination में statement देगा कि the Earth's mantle is consuming more water than it is releasing through volcanic eruption. This statement will be right. This is recent scientific study.
So this has been published in the journal called as Nature. Nature is one of the most prominent scientific magazines. अगर नेचर में आप आर्टिकल पब्लिश करते हो देन यू नो you have a good scientific caliber. So these experiments have been done okay in the Mariana Trench. So वहां से पता चला है कि ज्यादा वाटर कंज्यूम कर रहा है, एंड दिस इज दैट सबडक्शन जोन, एंड जहां पे भी सबडक्शन होता है और पानी भी अंदर जाएगा, एंड दिस इज द वोल्केनिक eruption. Okay. So next topic we shall be discussing is earthquakes. Now why we'll be discussing earthquakes? Why? So कोई भी टॉपिक डिस्कस करने से पहले ना वाई मैं बताऊंगा, क्योंकि ये रिसेंट न्यूज में. फर्स्टली इट इज बिकॉज ऑफ रिसेंट टर्की सीरिया earthquake. Turkey Syria earthquake, and also because of seismography. So recent revolution has been made in seismography, like we have discussed yesterday. We have found the fifth layer also. This fifth layer has been found because of the earthquake waves. So this we have discussed. Earthquake waves we have discussed. The first thing is where the Turkey and Syria earthquake has occurred. Okay. So in order to know these things, let's discuss what is earthquakes. पहले मैं इसका static content बता दूंगा earthquakes का. So I hope you guys know, you guys are aware of the static content. So should I discuss the static content also or just discuss the current part? Okay. करंट में क्या बताऊंगा मैं? आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द earthquake यहाँ पे हुआ, ये लोकेशन है, प्लेट बाउंड्रीज क्या है. सो शुड आई डिस्कस इन दैट वे और शुड आई स्टार्ट विद द बेसिक्स एंड कंप्लीट एवरीथिंग? आई वांट योर कमेंट्स हियर, प्लीज कमेंट. सो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स और जस्ट द करंट पार्ट. स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा क्यों हो रहा है चीजें. So if I'm just discussing the current affairs, then okay, you'll not understand it completely. So only current, you know, अगर discuss करूँगा then only current, okay, good. कुछ लोग बोल रहे हैं integrated discuss करो. So current plus basic में time लग जाएगा, okay? अच्छा, it's already 6. चलो then I'll pay more focus on the current part. Now, the earthquake has happened along the Turkey and Syria. Now we'll see which our plate boundaries are involved here. So question which they can ask is along which plate boundary. So I'll roughly draw the map here. So this is roughly Turkey. ये Turkey है. And नीचे यहाँ पे Syria है. So this is Syria. And यहाँ पे नीचे Africa है. So this is Africa. Okay. And this is the Mediterranean Sea. Mediterranean Sea. Now let's see the types of the plate boundaries here. Northern part of Turkey में you have North Anatolian Fault. North Anatolian Fault. So North Anatolian Fault is a transform fault. So I'm discussing only current affairs here. If you are able to understand, then well and good. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, then मुझे बताना. ये नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, एंड टर्की और सीरिया के बीच में जो है फॉल्ट, दिस इज ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट. द ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट इज मोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्म, बट इट इज मोर ऑफ ए ट्रांसप्रेशनल बाउंड्री.
At the basic level you can call it as a transform fault, but यहाँ पे थोड़ा compression भी है and transform fault भी है. तो इसके नीचे तीसरा fault है यहाँ पे. One more fault here. This fault is called as Dead Sea fault. Dead Sea fault is there. So this is divergent plus transform both. So this is more of a transform fault. Means आजकल जो movement है transform fault है. 2-3 million years ago it was a divergent fault. So it is transform plus divergent. And अभी जो टर्की एंड सीरिया का earthquake हुआ है, that is here. यहां पे हुआ है along the border of Turkey and Syria. Now here you have a triple junction. This is a triple junction. So इसके ऊपर है you have Eurasian plate here. So this triple junction is between Eurasian plate. इसके नीचे है African plate. This is African plate. And on this side, you have Arabian plate. Arabian plate. So the recent Turkey and Syria earthquake is basically between Turkey and, it is between the Eurasian plate and Saudi plate, Arabian plate. Recent earthquake is between Eurasian plate plus the Arabian plate. And the type of the plate boundary is transform plate boundary. I'll tell you some of the characteristics of transform plate boundary. So transform plate boundary, okay, it is due to the plates are sliding past each other. There is side by side movement. This is avolcanic in nature, means there is no volcanism. And thirdly, the intensity of the earthquake, the magnitude of the earthquake is directly proportional to the square of the width. जितना वाइड होगा वाली बाउंड्री, उसका स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पे मैग्नीट्यूड होती है. ओके, सो नीतू इज आस्किंग स्टैटिक पार्ट भी करवा दो. सी मैं करता हूं, मैं सिर्फ पहले करंट और उससे रिलेटेड चीज करूंगा. अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है देन स्टैटिक, थोड़ा बहुत स्टैटिक पार्ट भी करूंगा. बिकॉज अर्लियर आई थॉट आपको पूरा चीजें समझ में. सी यूपीएससी का क्वेश्चन ना सिर्फ ऑफ करंट अफेयर्स पढ़ के आप सॉल्व नहीं करोगे, उसके लिए आपको डेप्थ इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है. सो दैट्स व्हाई आई थॉट थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स भी बताऊं, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आप आत्मनिर्भर बन जाओगे, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे. मीन्स आपको किसी की जरूरत नहीं होगी. अगर सिर्फ मैं करंट अफेयर्स बताऊंगा तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा ना वो. इवन दो हियर आल्सो आई एम गिविंग यू सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. Okay, anyways this topic I'll continue with the current and related topics. तो एग्जाम्स में जो स्टेटमेंट आएगा ना उसके हिसाब से मैं बताऊंगा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक में फिर देखते हैं. सो these are the some of the features. And transform plate boundary is also called as conservative plate boundary, because no oceanic crust is created or destroyed. So that's why it is called as conservative plate boundary. And one very good example of the transform plate boundary, okay, is the San Andreas fault in California. San Andreas fault in California. Okay. So since we are discussing the earthquake in Turkey and Syria, here we'll talk about the various methods of measuring the earthquakes. Methods of measuring earthquakes. Okay. So there are so many methods.
but in that I'll discuss two methods here. So one method is the measuring the magnitude, other method is measuring the intensity. So intensity में you will discuss or you will measure number of people died, कितने लोग मर गए, कितना नुकसान हुआ है, इकोनॉमिक लॉस कितना हुआ है, कितना लोग मरे, how many people have died, और कितना लोग are undergoing post traumatic stress disorder. So such kind of things are measured in the intensity, and intensity is measured in Mercalli scale. इसको Mercalli scale में measure करते हैं, and Mercalli scale ranges from 1 to 12, 1 से 12 तक range करता है. Okay, and Mercalli scale is subjective also. It is highly subjective. अलग अलग जगह अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीट्यूड सेम है, और जो भी न्यूज में सुनते हो ना, दैट इज मैग्नीट्यूड से 7.6 बोलते हो आप. ओके, 7.6 अर्थक्वेक अगर जापान में आया, इंडिया में आया, इंटेंसिटी इंडिया में ज्यादा होगा, नुकसान इंडिया में ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारे बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, बहुत सारे लोग मर जाएंगे. लेकिन जापान में उतना नुकसान नहीं करेगा, इसलिए उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव है. डिपेंड्स ऑन द जुरिडिक्शन, डिपेंड्स ऑन द कंट्री वेयर यू आर लिविंग इन, डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज. जब अर्थक्वेक आया, आप क्या करना चाहिए आपको पता होनी चाहिए. सो वेरी करता है, इसलिए उसको सब्जेक्टिव बोलते हैं. लेट मी रीड द कमेंट्स. ओके, नीतू बोल रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू. मुझे फर्स्ट टाइम ज्योग्राफी समझ में आ रहा है, थैंक यू. Mercalli scale for intensity, very good. Suman, magnitude Richter scale, okay, fine. Okay, good information, Ria. Okay, 0 to 10. Okay, fine. So let's discuss about the magnitude here. So the magnitude varies between, yes, excuse me, this varies between 0 to 10, and the method which is used, this is called as Richter scale. लेकिन इसका improvised version जो है, that is called as MMS, Movement Magnitude Scale, is a better version. Generally अगर 8 के ऊपर आप Richter scale में generally measure नहीं करते हो, Movement Magnitude Scale में measure करते हो. And it is a logarithmic scale. A logarithmic scale है. The energy released is multiplied by 30 times. इसका मतलब है अगर मैग्नीट्यूड 4 है से उसमें 1 टन ऑफ TNT एक्सप्लोजन का एनर्जी रिलीज हो रहा है. अगर मैग्नीट्यूड 5 है, 30 टाइम्स TNT, 30 टाइम्स RDX एक्सप्लोजन का इंपैक्ट गिरेगा. So energy is multiplied by 30 times by every consecutive magnitude on Richter scale, and the amplitude increases by 10 times. इसका मतलब यह है, for example, okay, magnitude 2 पे 100 सेंटीमीटर्स का शेकिंग हो रहा है अर्थ क्रस्ट का, then magnitude 3 पे 1000 सेंटीमीटर्स शेक होगा. So 10 times ज़्यादा बढ़ रहा है. So amplitude or the shaking of the earth increases by 10 times, energy increases by 30 times. Okay, and improvised version of Richter scale is called as moments magnitude scale. So this can be asked because recently in Turkey the intensity was very high. The magnitude is not that high. Magnitude 7.8 था, 7.7 था, इनसे दोनों के बीच में 2 earthquake आए थे. लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा था बिकॉज ऑफ द बैड बिल्डिंग स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ बैड कम्युनिटी रेजिलियंस, बिकॉज ऑफ non preparedness for earthquake. Okay, because of all these reasons the death toll was very high in Turkey. According to government official estimates it was around 58,000, means 60,000 के आसपास लोग मर गए.
just in the earthquake. So such kind of questions can be asked here. Okay, understood? Is it clear? Should I go in this way? Fine. Okay, यहाँ पे faults लिखा है. So this is Turkey, this is Syria. यहाँ पे तीनों faults है, North Anatolian fault, East Anatolian fault and Dead Sea fault. तीनों ही transform faults है. Basic level पे ये याद रखना. Okay. यहाँ पे plates भी अलग अलग देखो, आप देख सकते हो. Okay. जो Anatolian plate है, this is part of the Eurasian plate. ये Arabian plate है. Arabian plate ना एक minor plate है. नीचे कौन सा है? African plate है. So Eurasian plate here, African plate here, Arabian plate. So these are the various plates which you can see. A plate boundary का map भी देख लेना. With respect to the ट्रिपल जंक्शन विच वी आर डिस्कस, अभी जितना भी डिस्कस किया उसको एक बार इसमें भी पॉज करके देख लेना. okay? So these are the three different types of faults. Since अभी faults की बात कर रहे हैं, so when the divergence is taking place, it's called as a normal fault. When the compression is taking place, it is called as the reverse faults. When the side-by-side interaction is taking place, it's called as the strike or a slip fault. Is it clear? टर्की सीरिया से जो भी क्वेश्चन आएगा अटेंड करोगे कि नहीं? I discuss all the things, okay, regarding the earthquake. And इसके पहले I have discussed P waves, S waves, L waves, R waves. Okay. Yes, very good. DD highest has been in Chile. Okay, 9.5 in 1964. Good. So you're asking about PDF. Okay, fine, मिल जाएगा, लेकिन आप नोट्स बना लो, वो अच्छा है. Okay, PDF ही रहता है. Now one point important here is isoseismic line क्या है? This also can be asked. Isoseismic. See, iso का मतलब होता है same. Seismic means earthquake. Now isoseismic क्या है? Are they talking about same intensity or same magnitude? So here isoseismic का मतलब है same intensity, Mercalli scale वाला. Okay, don't get confused between intensity and magnitude. Okay, isoseismic is same intensity. Okay, so this is different types of volcanism which I have discussed already. कभी this is called as the plume. इसको बोलते हैं plume. And आजकल ये plume release होने से ना, these plumes, okay, sometimes they'll be giving a statement. Statement में देगा, the plume, okay, which is released from volcanism will never enter the stratosphere. It is restricted to troposphere only. Statement गलत है. Stratosphere में भी जा सकता है. One more statement they will be giving. The volcanic plumes are also responsible for ozone hole depletion. Yes, it's right. Because sometimes the plumes will be shooting into the stratosphere. जब stratosphere में जाएगा, तो they will be releasing lot of water vapor, and this water vapor, okay, will create ice crystals, and these ice crystals will facilitate the depletion of the ozone. Okay, so they can cause ozone depletion also. See, एक चीज अब blindly याद रखना, अब कोई भी स्टेटमेंट को डिनाई मत करो. अगर वो बोल रहा है ओके ये प्लूम ओजोन को खा जाएगा, यस भाई, आज तक नहीं हुआ होगा, फ्यूचर में होगा ना, क्यों नहीं हो सकता है? आप ये पॉसिबिलिटी को क्यों डिनाई कर रहे हो, राइट? जब तक आप कोई भी चीज 100% श्योर नहीं हो, आप लोग डिनाई मत करना. ये मत बोलना नहीं हो सकता है. भाई क्यों नहीं हो सकता है? Always have this blind hope that it can happen in the future also. Okay, there's a request for me to speak in English also. So these are the different types of eruption. Okay, now let's enter into climatology. Okay, so recently news में आया mammatus clouds.
ओके, सो दिस आर द मैमरी ग्लैंड्स. आप इस चीज को देखो एंड आप ये भी देखो, क्लाउड्स को भी देखो. सो क्लाउड्स देखो आप, ये भी मैमरी ग्लैंड्स जैसे दिख रहे हैं. सो दैट्स व्हाई दिस आर आल्सो कॉल्ड एज mammatous clouds. Mammatous clouds. So they can ask, in which type of a cloud, कौन से क्लाउड में फॉर्म होगा, ओके, व्हेन इट विल बी फॉर्म, कब फॉर्म होगा, व्हाई इट विल बी फॉर्म, राइट, एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सच काइंड ऑफ क्लाउड्स. इसका इफेक्ट क्या है. सो आई विल बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन. से कोई भी टॉपिक आपके सामने आता है ना, द फर्स्ट थिंग्स विच विल बी आस्किंग इज व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई. ये सब क्वेश्चंस पूछ लो ना, देन आंसर अपने आप आ जाएगा. नाउ, in which type of clouds they are found? These are generally found in cumulonimbus clouds. Okay, if the statement is given they are found in cumulonimbus clouds only, no, बाकी क्लाउड्स में भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में ज्यादा फॉर्म होगा. जनरली क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आर आल्सो कॉल्ड एज द एनविल क्लाउड्स. इसको बोलते हैं एनविल क्लाउड्स भी बोलेंगे. ओके, वी कैन आल्सो call them as thunderstorm clouds. They're also called as thunderstorm clouds. तो ये क्लियर हो गया कहां पे फॉर्म होता है, राइट. व्हेन दे आर फॉर्म, कब. व्हेन मीन्स they're generally formed when there is very high level of convection. Convection means more evaporation. Yes, I'll discuss about the cirrus clouds also. Okay. Blue, where are you from? So convection. Secondly, they're also formed over the empty air mass. Empty means maritime, tropical. So जो tropical areas में marine waters जो होते हैं, if they are warm enough, then also such kind of clouds are formed. Okay, when it is formed. Okay, why it is formed? Okay, the answer lies here only. Why? Because of heat. So because of heat you'll be having convection, and also because of high availability of moisture. Okay, moisture available होना चाहिए, and moisture available कहां पे होगा, ओशन के ऊपर होगा. एंड हीट कब होगी, जनरली समर्स में होगी. इफेक्ट्स क्या होगा, ऑफ कोर्स आपको क्लाउड के दिख के लग रहा है बहुत ज्यादा बारिश करेगा. यस, सो दे विल बी फॉर्मिंग दे विल बी हाई रेनफॉल क्रिएट करेगा, हाई रेनफॉल, इनफैक्ट हेवी रेनफॉल. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज डाउनपोर. It's also called as downpour. So thunderstorms are also associated with this. Okay, babu blue ardhamainda. Okay, so thunderstorms are also, and is clouds में ना you can also have lightning. जब भी ऐसे clouds होती है ना, okay, you will also have lightning because of the extra charge. So all these points can be asked. Okay, next topic. So next topics which we'll be discussing is the topic called as jet streams. So we'll discuss various topics associated with the jet streams. So jet streams. So jet streams are geostrophic winds.
What are these geostrophic winds? So geostrophic winds are those winds where the winds will be moving perpendicular to the PGF. So this is the direction of the wind and this is the PGF. PGF is pressure gradient force. So what is this PGF? PGF is the difference between high pressure and low pressure. So generally, आपने सुना होगा, winds will be moving from high pressure to low pressure. So this is the direction of the PGF. लेकिन these winds are moving perpendicular to PGF. So such kind of winds are called as the geostrophic winds. And in which conditions the geostrophic winds are created? See, for the geostrophic winds to be created, you have to be at high altitude, because in high altitudes the friction is very low. So high altitudes में friction बहुत कम होता है. जब friction कम होगा, speed ज़्यादा होगा. जब speed ज़्यादा होगा, Coriolis deflection भी ज़्यादा होगा. जब Coriolis deflection ज़्यादा होगा, then it will be moving 90 degree to the PGF. So these are the various conditions under which the geostrophic winds are formed. So the geostrophic winds are also called as upper tropospheric westerlies. They are also called as upper tropospheric westerlies. Basically, these winds are moving from west to east. These are the geostrophic winds. आप देख सकते हो यहाँ पे ये west to east के direction में जा रहे हैं. Since they are moving in the upper troposphere, they are also called as upper tropospheric westerlies. These are nothing but, these are like rivers. जैसे जमीन के ऊपर नदी होती है जिसमें पानी बहता है, ये these are the rivers of the air which are traveling at the speed of around 400 km per hour, 150 to 400 km per hour. These are the bands of the air which are traveling at 150 to 400 km per hour in the upper troposphere. इसकी हाइट क्या होगी? So इक्वेटर के आसपास या सब ट्रॉपिक्स में इसकी हाइट होगी 14-15 kilometers. So if you're moving towards the polar regions, means 55 to 65 north या south में जाओगे, सब polar regions में इसकी हाइट होगी 7 to 8 kilometers. So हम एवरेज मान सकते हैं इसका, average is 10 to 12 kilometers. So they are flowing at the height of 10 to 12 kilometers. Speed है 150 to 400 kilometers. Okay, and these meandering means they are wavy in nature. They are wavy in nature. Then what is the role of this upper tropospheric westerlies? इनका role क्या है? So इसका origin कैसे होता है? I will not discuss now because it has become too lengthy to discuss. Basically, their role, okay, is to balance the heat on the surface of the earth. Balance the heat on the surface of the earth. In fact, these upper tropospheric westerlies, they balance 50% of Earth's heat. 50% को of the Earth's heat को ये balance करता है. जो planetary winds है ना, this trade winds, westerlies and easterlies, they balance around 20 to 30% of the heat, and ocean currents जो है वो 20 to 30% of the heat को balance करता है. So they play a very important role. And these upper tropospheric westerlies, this can be divided into two types. Westerlies. So this can be divided into two types. So one which are very wavy, कुछ ज्यादा ही meander कर रहे हैं. Okay,
इसको बोलेंगे रॉसबी वेव्स, रॉसबी वेव्स, जिसका पाथ डिटरमाइंड है, path is determined. These are called as jet streams. And what is the path here? If they have a defined path, what is the path of this jet stream? So these jet streams, they flow between 30 to 35, north and south, 55 to 65, and then the polar region. So polar region will ignore, okay, because not many humans live there and the climatic phenomena is also not that observed over there. So 55 to 65 and 30 to 35, okay, and these are located between the meridional cells. आप देख सकते हो 3 meridional cells है. You have Headley cell, you have the Farrell cell, and you have the polar cell. You have the 3 cells. So these jet streams are flowing between these meridional cells. उनके बीच में फ्लो करता है. So इसका नाम है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. इसका नाम है पोलर जेट स्ट्रीम. Now the subtropical westerly jet stream plays a very important role, okay, in अभी आजकल बारिश हो रही है इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में. So these subtropical westerly jet stream, they drag the remnants of the temperate cyclones. Means Mediterranean Sea में, Caspian Sea में जो भी cyclones है, उसको खींच के इंडिया की तरफ लेके आते हैं. इसलिए नॉर्दर्न इंडिया में बारिश होती है. And this is called as the western disturbance. The western disturbance is because of subtropical westerly jet stream. And polar jet stream. अभी polar jet stream के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं because it's in the news for various reasons. Now polar jet stream, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे. So it is separating the colder air of the polar region from the warmer air of the tropical region. एक cold और warm को separate करता है. And whenever it is streamlined, so whenever it is straight, it divides the colder region from warmer region. And whenever it meanders more, जब भी ये ज़्यादा घूमता है ना, then say this is jet stream. ये बहुत ही ज़्यादा घूम गया, for example like this. जब ये ज्यादा घूमता है देन कोल्डर एयर ट्रॉपिकल रीजन में आ जाएगा एंड द वार्मर एयर पोलर रीजन में चला जाएगा. सो गर्म हवा उधर चला गया एंड ठंडा हवा इधर आ गया. सो दिस इज हाउ surface heat is balanced. The statement will be given: whenever the jet streams meander, they balance more heat on the surface of the earth. That's the first statement. Okay, you can look at the perspective here. एक बार इसको देख लेना या तो स्क्रीनशॉट आप खींच लेना. I can't see the comments. There is something on this. Please, okay, system operators, देख लेना. So next principal phenomena is heat dome. Heat dome. So let's see what is this heat dome. Yes, DD, yeah, jet streams will be helping in aircraft travel also. So this is North America. Okay. Roughly this is North America. See North America में यहाँ पे एक जगह है Lytton. This is in Northwest Territory of Canada. See Canada is near to the polar region. So even in summers now, the temperature should not cross like 15 to 20 degrees. ये क्रॉस नहीं करना चाहिए.
लेकिन कभी कभी समर्स में ना the temperature increases to 49 degrees centigrade also. It becomes very hot. It happens because of the jet stream and heat dome formation. दोनों की वजह से हो रहा है, जेट स्ट्रीम की वजह से एंड हीट डोम की वजह से. तो ये दोनों डिस्कस करते हैं क्यों फॉर्म हो रहा है. सो इसके पास ओशन है, यह पैसिफिक ओशन हियर. Now the Pacific oceans, when it becomes warm, and because of the climate change, the oceans are also becoming warmer. When oceans are becoming warmer, okay, lot of warm, moist air is created here. And this warm, moist air over the ocean is dragged by the jet streams. jet streams एक गर्म हवा को कनाडा में जाके छोड़ देगा. सो कनाडा जाके छोड़ने के बाद इट विल बी फॉर्मिंग ए डोम ओवर कनाडा. सो एक कनाडा के ऊपर यहां पे एक डोम फॉर्म करेगा. जब भी जेट स्ट्रीम ऐसा ओमेगा शेप में आता है, this looks like omega. Okay, this is also called as omega block भी बोलते हैं इसको. ये सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, omega block. So यहां पे गर्म हवा ट्रैप हो गया. Hot air from Pacific is trapped. Pacific is trapped. And after the hot air has been trapped, so this will create a high pressure over Canada. So this is the surface, and यहाँ पे एक high pressure form होता है, high pressure dome form होता है. And it's in high pressure dome there is a sinking air. ऊपर से हवा नीचे है. तो पीछे जो ओमेगा ब्लॉक जो दिख रहा है ना, this omega block, so this will be pushing the air below. जब हवा को नीचे पुश करेगा, because of adiabatic compression and heating, the temperature increases to around 50 degrees centigrade. So it's like, you're pumping the air in the bicycle. जब साइकिल में जब हवा भरते हो, जब पंप यूज करते हो, सो नीचे एयर को कंप्रेस कर रहे हो, आप एयर को दबा रहे हो. जो साइकिल पंप का नीचे का हिस्सा देखना कभी आप, बहुत गर्म हो जाता है. सो दिस इज लाइक ए साइकिल पंप एक्शन. व्हेन द एयर इज बीइंग कंप्रेस्ड, बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, बिकॉज ऑफ विच द टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर बहुत ही बढ़ जाता है. एंड दिस इज कॉल्ड एज द हीट डोम इफेक्ट. ओके, so it is created by a meandering jet stream, and in which all conditions the jet stream will be creating a heat dome. So conditions under which the jet stream creates a heat dome. Of course, climate change is the reason. Second reason is the jet stream should be steady and it should become slow. और steady होना चाहिए, slow होना चाहिए, तो तभी तो डोम फॉर्म करेगा. एंड thirdly, there should be temperature gradient. Temperature gradient between the ocean and land should be high. Means the difference in the temperature between the ocean and land should be high. Means ocean का temperature ज्यादा होना चाहिए. And thirdly, ocean heat waves. If lot of heat waves are there on the Pacific Ocean, obviously they will be dragged towards the continent also. So these are the various conditions under which the heat dome is created. Okay, is it clear, everyone? Yes, it has led to lot of extreme conditions. See, ये वाला topics आपको कहीं पे भी मिल जाएगा. So this diagram you can find on NOAA website. Okay, it's a oceanography
में रिसर्च करने वाला यूएस का एक वेबसाइट है, वो इट्स अ गवर्नमेंट वेबसाइट. सो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग हियर, वॉट एवर इज हियर मिल जाएगा. So this is the northwestern territory of Canada. This is called as the Omega Block. This forms this Canadian heat dome. Yeah. So various conditions of the heat dome formation is also explained. Okay. Now let's see one more phenomena, which is called as atmospheric rivers. Second phenomena is atmospheric rivers. See, you have the tropical region. Say tropical region are warmer, they are more moist. Means इसमें humidity ज्यादा होगी. Humidity is nothing but it's the water vapor content. Heat dome सबको समझ में आ गया है ना? कोई भी क्वेश्चन आएगा हीट डोम से आप आंसर कर पाओगे, राइट? गुड. So atmospheric rivers are such kind of winds where the tropical warm moist air is dragged to the temperate region. So ये वाली जो region है ना, this is called as the temperate regions. So this air is dragged into that region. And these are happening because of the winds. Okay. And these are the jet streams. Jet streams are also called as Rossby waves. Now, what are the effects of this? Effects. So, whenever this tropical moist air is dragged into temperate region, say in temperate region, they are coming across a mountain. अभी हवा जा रहा है यहाँ से जिसमें बहुत सारा मॉइस्चर है, लैंड की तरफ चला गया वहां पे, एंड वहां पे रॉकी माउंटेन है. So it will come across the Rocky Mountains, and then the air will fly high because it will expand, adiabatic expansion, cooling will be taking place. So rainfall formation hoga on the western side. On the western side of the Rockies, generally, you'll be having high rainfall, and this is the orographic rainfall. So they also play a very important role in the distribution of the heat. So ये वाली जो हीट है इसको वहां पे कैरी करेगा, एंड मॉइस्चर में बहुत सारा हीट कंटेंट होता है, एंड दिस हीट इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन. बिकॉज ट्रॉपिकल एरियाज में जब भी वाटर एवापोरेट होता है वो बहुत सारा हीट लेने के बाद ही एवापोरेट होता है. बिना हीट दिए हुए लिक्विड विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वेपर. So finally it is converted into vapor, and that vapor has a lot of heat, and that is carried into the temperate region, and these are called as atmospheric rivers. So DD is asking, heat dome condition possible in other continents like Africa, Europe? See, जब भी हम डिस्कस करते हैं ना कोई भी क्लाइमेटिक फिनोमेना के बारे में, generally we discuss with respect to North America, because that is where most of the research is being done, and area wise भी बहुत बड़ा है वो. Okay, and एक country है like you have USA, Canada, दोनों ही बहुत बड़े countries हैं, and उनका area भी बहुत large है, बहुत बड़ा area है. अभी आप यूरोप में जब जाओगे ना आपको बहुत सारे छोटे छोटे countries है. So these small countries, they might not be able to study the entire phenomena. जब भी ये विंड चल रही होती है 10-15 देश को पार करके जाता है यूरोप में, देन एक कंट्री को पॉसिबल नहीं होता है इतना सारा फिनोमेना पढ़ना. तो नॉर्वे बहुत सारा रिसर्च करता है क्लाइमेट में, यूके थोड़ा बहुत रिसर्च करता है बिकॉज इट हैज कोस्टल लोकेशंस. The rest of the countries do not pay much attention. A lot of research is being done in North America, and it is quoted in various journals, scientific journals में ही quote होता है. and जब तक कोई फिनोमिना कोट नहीं होता है कोई अच्छे जर्नल में, एंड हम जैसे लोग पढ़ा भी नहीं सकते जब तक कोट नहीं होगा, हम पढ़ा नहीं सकते, बिकॉज इसके लिए डेटा होता है, एक प्रूफ होता है, एक फिनोमिना ऑब्जर्व किया गया है. सो दे कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड इन अदर कॉन्टिनेंट्स,
बट आई डोंट थिंक इट विल बी फॉर्म्ड इन अफ्रीका. यूरोप में जरूर फॉर्म होगा. अभी रिसेंटली जब फॉरेस्ट फायर्स हुआ था यूरोप में, इन स्पेन यू हैड फॉरेस्ट फायर्स. इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द हीट वेव. बट regarding that I don't have much of academic research. So on this phenomena I have. So let's see what is this atmospheric rivers. So the atmospheric rivers, when make a landfall, that means when they are hitting the land, they can create snow or rainfall. So they're also part of the earth's water cycle, that is they carry the waters from the moisture from the tropical region and bring it to the temperate region. So they are like rivers in the sky. Now sometimes they can ask you, a pineapple express क्या है? आपको various options दे सकता है. So it is a recent Vande Bharat Express inaugurated by Modi ji, in the Andaman Nicobar Islands. First option ऐसा होगा. Second option, it is named after a bumper crop of pineapple in the state of Karnataka due to the pre-monsoonal showers. Second option ऐसा देगा. Third option, it is a kind of the atmospheric wind or atmospheric river which blows between Hawaii and North America. So here third option is right. So आपको confuse करने के लिए ना ऐसे options बहुत सारे दे सकता है. And आपको first two options ना बहुत ही सही लग सकते हैं. आप यहाँ पे फंस जाओगे, इसलिए ध्यान रखना. So the Pineapple Express is nothing but it's a atmospheric river that brings warm moisture from the tropics to the western coast of the North America. इसको Pineapple Express क्यों बोलते हैं? Because it originates near tropical Pacific, Hawaii. Hawaiian Islands में ना pineapple बहुत ग्रो होता है. So Hawaii से ये नॉर्थ अमेरिका की तरफ ये हवा आती है, इसलिए इसको पाइनएप्पल एक्सप्रेस बोलते हैं. ओके, यस रिया, यस फॉरेस्ट फायर भी हीट से होती है. सो दैट इज ओके. नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड एज फुजीवारा इफेक्ट. You can see the earth over here. These are the cyclones. So these are called as the twin cyclones. Means those cyclones almost same time पे form हो चुका है. And these two cyclones are roaming. They are not stationary. They move under the effect of the winds. हवा चलती है. ये दोनों cyclones एक दूसरे से merge हो जाते हैं. They merge with each other. Okay. So the merging of two tropical cyclones is called as the Fujiwara effect. Okay. So what are the conditions here? They should be formed around the same time. And of course, if they have to meet each other, अगर दोनों को मिलना है, then the distance between them should be less than 1400 kilometers. Okay. So recently there has been a cyclone in New Zealand called as Gabrielle cyclone. Okay. So New Zealand is again in news because of various reasons. So why New Zealand is in the news? Because of various reasons. Because the PM resigned citing personal reasons. Means family को time देना है, इसलिए she has resigned. Okay. ये कहीं पे नहीं होता है, वहां पे हुआ है. And during COVID, the PM of New Zealand has made a lot of efforts. And यहाँ का जो डेथ रेट बहुत ही कम था. इनफैक्ट कोविड केसेस भी बहुत सारे कम थे. It's because of good governance. It's a very good example. And recently, New Zealand has volcanism also. It has earthquake also. For all these reasons, New Zealand is important. So let's see a little bit of geography of the New Zealand. The New Zealand is made up of two islands. Okay, North Island है and South Island है. South Island. South Island is mostly continental island and North Island is mostly volcanic because you have a plate boundary like this. यहाँ पे एक plate boundary है. So इस तरफ है
Indo-Austral plate, and on this side you have Pacific plate. Okay, and here is this subduction plate boundary. यहाँ पे है subduction plate boundary. So since the subduction is taking place, this is undergoing volcanic eruption. So that's why it is volcanic in nature. And in New Zealand you have a mountain called as Southern Alps. These mountains are called as Southern Alps. And in southern island of New Zealand, the prominent winds are westerlies. The westerlies. And these westerlies are creating a windward side and a leeward side. On the leeward side, जहाँ पे कम बारिश होता है, here you have Canterbury Plains. And Canterbury Plains are famous for dairy production and beef production. दोनों के लिए famous है. Okay. And recently, okay, Australia and New Zealand, they were negotiating with India for a free trade agreement. And India did not agree. India also did not join RCEP because India was a little bit skeptical about the dairy products import into India, which are much cheaper here. यहाँ पे सस्ते dairy products अगर इंडिया में आएंगे, इंडिया का farmer को नुकसान हो जाएगा. Okay. So कुछ doubts है क्या? Yes, you are right. DD distance between two ice should be less than 1400 kilometers. Okay. So Ria, you are worried about the class time 4:30 to 6:30. Okay, whatever it is. Okay, बाप बताओ वो और पढ़ाऊँ कि नहीं? मेरे पास और बहुत सारे topics हैं. Shall I continue or not? Tell me. So one more word can come in the examination that is called as the extreme weather events. Extreme weather events. So extreme weather events are increasing because of climate change. और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है. तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्या हो सकते हैं? इट कैन बी सीवियर ड्रॉट. ओके, इट कैन बी फॉर्मेशन ऑफ हेल, ओले जो बहुत पड़ेंगे, इंटेंस फॉग होगा, ओके, या सीवियर कोल्ड कंडीशंस, कोल्ड वेव्स आएंगे, या फ्लड्स आएंगे, अ लॉट ऑफ साइक्लोन्स फॉर्मेशन होगा, ओके, टॉर्नेडो फॉर्मेशन होगा, या फॉरेस्ट फायर्स, और लॉट ऑफ थंडर, लाइटनिंग. एनी काइंड ऑफ फिनोमिना is called as an extreme weather event. So nowadays extreme weather events are increasing, and some of the events are Australia के bushfires, China में flooding हुआ था recently in the Henan province, and recently Europe has faced mega drought. So because of this mega drought in Italy, a lake called as Lake Garda, Garda, okay, it has gone dry, and Europe is facing a lot of water crisis. And USA में forest fires are very frequent in California, and this year forest fires fell more. And there was cyclone or hurricane Ida in USA. And recently आपने सुना है पाकिस्तान में floods आया, खतरनाक floods आए. And India में 2022 में बहुत सारे heat waves आए. And cyclone Taukte, okay, is an super cyclone. इसमें wind speeds have reached up to 183 km per hour. So it's also important. And of course, okay, recently India में a lot of landslides have also happened. Okay. See, आप लोग प्री के लिए तैयारी कर रहे हो ना? अभी टाइम भी नहीं हुआ है. I'll continue half an hour more. Okay. Let me finish some of the topics because from tomorrow again I have to discuss other topics. So physical geography can complete करने तो. Yesterday was supposed to take for longer time, but I couldn't take. वैसे भी ये YouTube का सेशन है ना, आपके पास ये YouTube रहेगा, then YouTube में it's available. You can see it later also if you're tired. Okay. Now let's see one more phenomena called as the glacial
lake outburst flood. So let's see what is this. So if you are having a mountain like this, at the base of the mountain ना, you'll be having a lake. यहाँ पे lake होती है. This is called as Tarn Lake. Okay. This lake is formed generally in the circuit. The circuit is nothing but is a depression which is formed by the ice. So at the end of this Tarn lakes or the circuit lakes, we'll be having moraines. So moraines are nothing but the glacial deposits. So these are the glacial deposits. तो यहाँ पे एंड में मोरेन रहेगा, तो यहाँ पे पानी रहेगा. Sometimes what happens is that ऊपर से अगर बहुत सारा आइस है, because of the global warming, the ice is melting more. ये आइस आके इसमें गिर जाएगा, तो इसमें पानी भर जाएगा. अब पानी भरने के कारण यहाँ पे जो बांध है, ये बांध टूट जाएगा. दिस ऑल्सो कॉल्ड एज आइस काल्विंग. जब बांध टूटेगा, इसमें जितना भी पानी है ये बाढ़ के फॉर्म में बाहर आ जाएगा. तो दैट्स कंटिन्यू. हेलो हेलो, आ रहा है? इज ओके? चलो. The next topic which we'll be discussing is polymetallic nodules. So these polymetallic nodules are potato-shaped metallic nodules. So these are made up of pure metals. See, India is facing a lot of crunch. So India के पास बहुत ही कमी है metals का, especially copper, zinc, cobalt, nickel, lead, इनमें बहुत कमी है. एंड अब आपको अगर बाकी के मेटल्स भी एक्सट्रैक्ट करना है, देन आपको बहुत सारा जंगल को डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, ट्राइबल का डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा. ऐसा बहुत मुश्किल है.
So that's why India is nowadays exploring these polymetallic nodules. So these polymetallic nodules are present at the bottom of the oceans. So ये ओशन बेड है, तो ओशन के बेड के अंदर ये नोड्यूल्स होते हैं, इसके ऊपर कोई डिपॉजिट्स नहीं आएंगे. So there is no sedimentation. So you'll find these nodules in the pure form. And ये extract करने के बाद you don't have to do a lot of purification, leaching करने की जरूरत नहीं है, एसिड के साथ ओर को वॉश करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसको मेल्ट करना पड़ेगा, आपको सारे ही मेटल्स मिल जाएंगे. So that's why it's very helpful for India. So this is how they'll be drilling. आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर शिप करी रहेगी, नीचे एक पाइप जाएगा एंड ओशन के बॉटम में ये जो नोड्यूल्स होते हैं इसको पिक करना पड़ेगा. लेकिन इसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं? व्हाट कैन बी द नेगेटिव फॉलोआउट्स ऑफ दिस? जब यहां से आप इसको कलेक्ट कर रहे हो ना, सो अ लॉट ऑफ सेडिमेंट्स कैन बी रिलीज्ड. बहुत सारा मिट्टी नीचे जमा हो जाएगा and the sediments can affect the life of the benthic organism or benthos. Then you'll be sucking out, you'll be bringing these nodules on the surface. After you bring these nodules on the surface, you'll be washing these nodules also. So then also sediments are released on the surface of the ocean. So because of which this will cause a lot of marine pollution. And some of the famous zones are Clipperton Clarion Zone. So this is located off the coast of USA. So यहाँ पे polymetallic nodules बहुत सारे हैं and USA will be exploring this polymetallic nodules. ये ध्यान रखना, जगह का नाम Clarion Clipperton Zone, also called as CCZ. It is located in Northern Pacific. So this deep sea mining will be affecting lot of cetaceans. Cetaceans are these organisms. So जितने भी बड़े बड़े mammals है, blue whales है, so इसको बहुत सारा affect करेगा. So what are cetaceans? They are the an infra order of aquatic mammals that include whales, dolphins, porpoise. What are the key characteristics of them? The fully aquatic lifestyle, streamlined body shape, often large size, and exclusively carnivorous diet. So their life will be affected a lot. So India is also starting up with a deep ocean mission. So India has acquired a land of 75,000 kilometers का square kilometers का एक सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में, मीन्स चागोस लक्षद्वीप रिज के नीचे. तो यहाँ पे इंडिया को एक 75,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का जगह मिला हुआ है. सो इंडिया विल बी एक्सप्लोरिंग फ्रॉम हियर. सो इसके लिए परमिशन इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा इसके लिए. ओके, सो दिस आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द डीप ओशन मिशन. Okay, so rest of the topics I'll be discussing tomorrow. Okay, I guess you guys are tired. See you tomorrow then. Okay, thank you.